Hi guys, this is Janhvi Kapoor and please subscribe to Siddharth Kannan's YouTube channel now. जानवी कपूर हर जगह आपको मिल जाती है और मिली फिल्म में भी मिल जाती हैं आपसे। हेलो। अरे बड़े ठंडे हाथ हैं आपके। हाँ? वो PTSD अभी भी चल रहा है फ्रीजर का शायद। माने वो अभी भी आफ्टर मैच चल रहा है आपका? उतरा ही नहीं है सर, मैं क्या बताऊं, वो ट्रेलर लॉन्च के लिए उन्होंने मुझे फ्रिज के अंदर रख दिया था, कहा था बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन होगा। So I said, yeah, of course, I promise you, उस दिन के बाद मुझे सर्दी हो गई, I've got some viral infection, I'm not contagious anymore. But yeah, it was very वो ठंडापन अभी तक नहीं निकला है। माने वो होता है ना, लोग मार्केटिंग पीआर के चक्कर में आपको एडवाइस दे देते हैं और फिर बाद में आप फ्रिज के अंदर से बाहर आती है बोलती है ये क्या हो रहा है। मार्केटिंग पीआर छोड़ो, मैं तो फिल्म के लिए वो कह रहे थे कि नहीं गूस बम्प्स अच्छे असली दिखेंगे और वो जो फॉग आता है वो असली लगेगा और शिवरिंग असली फील, और ये सब फीलिंग असली सुन के मेरे अंदर का एक्टर इतना एक्साइट हो गया कि मैंने कहा हाँ मुझे -15 डिग्री के फ्रीजर में डाल दो। बट देन जो हालत टाइट हुई ना मेरी, इट वाज बैड। पर तुम माने लिटरली आप शूट कर रही थी ना फ्रोजन चेंबर? यस। क्या बात है, दिस इज ट्रूली कॉल्ड मेथड एक्टिंग। इसलिए जब मेरे मम्मी पापा कहते थे एक्टर बनो, मैंने ना कह दिया बिकॉज आई कांट डू ऑल दिस। मोस्ट एक्टर्स डोंट हैव टू डू ऑल ऑफ दिस, ये मेरे अंदर का एक कीड़ा है एंड my director is as crazy as I am, and that's how he made the original also. So. I know. ट्रेलर लॉन्च के दौरान आपके पापा से आपने शायद कहा था कि पापा मेरी तारीफ मत करो, बोनी कपूर जी डू नॉट टॉक गुड अबाउट मी, क्योंकि दिन भर यही करते रहते क्या बेटी तुम इतनी प्यारी हो अच्छी हो, that's why you got this fear? No, honestly my father is very real with me, like he'll call me out on my shit. More than half, 80% of the time he's like, what are you wearing? एकदम बेकार लग रही हो, like he'll tell me. But उनको ऐसे लगता है कि अगर मेरी सबसे बड़ी कमी ये है कि मैं अपने आप को क्वेश्चन बहुत करती हूँ और खुद पे विश्वास इतना नहीं करती हूँ, like my confidence is low. So he, I think at the trailer launch felt the need to overcompensate, and you know I think more than me getting affected by people pointing out my privilege and not looking at my work individually, I think he gets affected. So he was very like, नहीं मेरी बेटी मतलब कर सकती है. So he went for it and I was like, पापा control अभी मतलब it's not that deep like. तो जब ये सब डिस्कशन होता है पापा ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं on this whole privilege thing and all, हाँ? I think नहीं, मैं बहुत affect होती थी. I think अभी धीरे-धीरे it's like you know, it's two sides to every coin. Yeah, you can't judge someone for coming from a non-privileged background and not give them opportunities because they're not privileged. But you can't judge someone because they're privileged also. I think judge someone on the basis of कि वो मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनका काम अच्छा है या नहीं अच्छा है, और वो किस नियत से काम कर रहे हैं। इस privilege thought की वजह से कभी कभार आप ज्यादा काम करती है, ओवर मेहनत करती है, क्योंकि आपको मालूम है कि वो आदमी डायरेक्टर ये सोच रहा होगा, शायद ये सोच रहा होगा, that's why do you overdo your hard work? Yeah, 100%. But I mean, it's funny for me to say it myself, but so many people have told me that like sometimes on a film set when you're throwing up and you have a fever and like you're on a drip, it's okay to say मैं 1 घंटा लेट आ सकती हूँ प्लीज, मतलब इतना कुछ नुकसान नहीं होगा. Like you might like die if you show up like this, but I feel like no, I'd rather be a walkover, I'd rather be a pushover, I'd rather kill myself working hard than anyone pointing a finger at me and saying कि देखा फिल्मी फैमिली से इसलिए इसने बोल दिया कि 1 घंटा. I don't know, like I don't want anyone to point that finger at me at all. Oh my God, I am so proud of you. इसलिए मुझे लग रहा है कि जो अब मिली आ रही है, and last time also we had a conversation. Do you, that's why pick and choose roles जहाँ तुम्हें लगता है कि यार ये दुनिया को दिखाएगा कि I am a very very solid actress. So लेकिन दुनिया के बारे में इतना है नहीं. मैं acting, of course I do it to give the audiences an experience. But for me it's like मेरे लिए ये exciting है. मेरे लिए अगर if it's not challenging, फिर मैं मेरे कला में आगे कैसे बढ़ रही हूँ और फिर क्यों कर रही हूँ. फेमस होने के लिए जिम के बाहर काफ़ी पैप्स आ जाते हैं, मैं हूँ फेमस अभी, मतलब आई डोंट नो, दैट्स नॉट व्हाई आई एम डूइंग दिस क्लियरली. आई डू इट बिकॉज आई लव
pushing myself and exploring different characters and bringing that experience to the audiences. And whether people believe it or not, I feel that I do have something to offer, and I'll push myself as much as possible to give audiences the best version of me. क्या बताए? और कभी कभार तुम्हें लगता है, though you're offering a lot more, क्योंकि ये जो side talk होता है कि it might be easy for her, अब affect करता है? कि do you think now you're over and done with it and you've accepted? ये हो सकते हैं conversations, but I don't give a. नहीं हो सकता है सर, but मैं आपको बताती हूँ, मैंने एनालाइज किया है ऑन द बेसिस ऑफ मेरे तरफ कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अभी आ रही हैं. आई थिंक फर्स्ट फिल्म हाँ शायद क्योंकि वो क्यूरियोसिटी थी कि श्रीदेवी बोनी कपूर की बेटी कैसे होगी, ये होगी वो होगी, बट वो पहली फिल्म ठीक है, दूसरी फिल्म तक भी चला होगा, लेकिन उसके बाद अभी तो देख लिया ना, अभी क्या क्यूरियोसिटी बची होगी. नाउ इफ आई एम गेटिंग एनी वर्क, इट मस्ट बी ऑन द मेरिट ऑफ व्हाट दे थिंक आई कैन ऑफर. You can't survive beyond 2-3 films. I don't think so, because it's not like I'm paying people to take me. उतनी अमीर तो हूँ नहीं मैं, ना ही पापा है तो like I mean now onwards it must be because किसी ने तो कुछ तो देख ही लिया होगा मुझ में. But golden rule ये है कि हर आदमी के पास एक business acumen है. कोई इतना दानवीर नहीं है कि मतलब खुद के नुकसान करके इसको लॉन्च करना है क्योंकि ये किसी की ये कोई नहीं करता. मैंने बहुत ट्राई किया पर एक घंटा कोई करता है ये सब. सो इट्स द ट्रूथ. एक दो चांसेस शायद हो जाते हैं, उसके बियॉन्ड इट डजंट हैपन. यार मैंने सुना कि आपके डायरेक्टर ने कहा बोनी जी डोंट एक्ट ऑपोजिट जानवी कपूर. अच्छा हाँ, बिकॉज सपोजिटली सुनने में आता है, कुड बी रॉन्ग, कि ही वाज गोना डू द एक्चुअल फादर्स रोल. ऐसा कभी नहीं था. नहीं नेवर. आई थिंक पापा का कहने का मतलब ये था कि जब उन्होंने हेलन देखी थी, जो कि ये फिल्म की ओरिजिनल है, उनको लगा था कि ऑर्गेनिकली जो फादर और डॉटर रिलेशनशिप है फिल्म में, वो हमारे रिलेशनशिप से बहुत मिलता जुलता है. हाँ. तो ही सेड ये तो बिल्कुल मेरी तरह है, वी नीड टू गेट समवन हु हैज द सेम स्पिरिट एंड वार्मथ, एंड ही थॉट मनोज सर वाज ऑलवेज द फर्स्ट चॉइस. अच्छा, तो ऐसा नहीं था कि बोनी सर करना चाहते थे और डायरेक्टर कहा नहीं ऐसे कुछ नहीं. आई थिंक द डायरेक्टर वुड हैव बीन मोर देन हैप्पी, बट आई फील लाइक इफ यू सी द फिल्म मनोज सर, नो वन कुड हैव प्लेड मनोज सर. अरे मनोज सर तो लुक्स लाइक द इटर्नल जगत पापा. Whenever you meet him, you just want to hug him, right? Yes. Tightly माने, हाँ? Yes, yeah, for sure. मैं कभी-कभार उनको ऐसे हग कर देता, we can't even breathe. तो वो और उनकी किस्से, if you just sit and talk to him, इतने मजेदार किस्म के आदमी हैं. हाँ. He's a lot of fun. आप ऑन स्क्रीन पापा को डांटते हैं जब उनकी गलत हरकतें होती हैं, right? Yes. ऐसे आप बोनी सर को भी डांटती हैं कि बहुत. हाँ? बहुत. So you're not like your daughter, you're like the mama. Yeah, I mean I don't know if I'm like the mama, but I do reprimand him a lot. And अगर आप पापा से पूछोगे, he'll say that I actually have the most clarity in speech and thought when I'm angry and when I'm upset. I like deliver monologues to him. So अभी recently I think मिली के trailer release से पहले ही मुझे कुछ some back and forth was going on, and I felt like मैं shoot में busy थी, वो किसी चीज़ में busy थे, and I was like I'm panicking because हमारा unit ready नहीं है, ये ready नहीं है, and we had like a fight, and it was our first producer actor fight. And then he came to my bedroom as my father, and he was like, I'm very impressed with everything that you said. And I was like, okay. So that was the papa talking. Yeah. But producer का एक और point of view था, right? Producer भी मान गए मेरी बात फिर. दो एक ही गोली में दो निशाने. But if life में tricky situation होता है, जैसे अभी आप मिली में भी you're in a very very tricky situation. How does your papa help you tackle that situation? You know, in my mind and in my life, I feel like every problem, no matter how big and monumental and life-altering, has always felt manageable because of my father, because of the strength that he has, because of everything that he's been through and seen in his life and survived, because of the stress I see him dealing with every day, but still putting on a smile for everyone around him. And so, हाँ, वो एक feeling है कि जो भी हो जाए पापा है तो सब ठीक है. Oh, I can resonate with that. मेरी दो बेटियां हैं तो मुझे भी वो फीलिंग आ जाती है कि उनको कुछ नहीं होने दूंगा. And I hope they feel like that too. No, but it's a very father thing. मैं अंदर से जितना भी तड़प रहा हूँ, मेरी बेटियों तक कुछ नहीं पहुँचने दूंगा. And that's how I think most dads to daughters are. Yeah. I'm a young father, so I feel like that also. Okay,
ट्रेलर में लास्ट में गाना है जीना होगा, राइट? जानवी को कभी ऐसी फीलिंग आई है कि बस ये डू और डाई सिचुएशन है, बट आई विल कम आउट ऑफ इट, ऐसा कोई सिचुएशन हुआ है? Do or die, I mean, yeah, I guess there have been a couple. I think emotionally in my personal life there have been a few moments where I felt like it's a bad phase, but I have to come out of it, for my parents and for my love for cinema, and honestly, like at every obstacle in my life, the thing that's kept me going is कि मामा पापा का नाम रोशन करना है, सिनेमा के लिए जीना है, honestly. How do you come out? क्या आप इंट्रोस्पेक्ट करती हैं खुद के साथ, किसी से बात करती हैं, कैसे? I think I'm a big believer. वो कहावत होती है ना कि this too shall pass, and everything passes. Everything passes. Like मैं शूट कर रही थी और ये बहुत बुरा एग्जाम्पल है, बट मिस्टर एंड मिसेस माही जयपुर में हम एक 10 to 12 PM शिफ्ट करे, so 10 in the night to 12 PM, and we were shooting in a metro, so we could only break once to pee. It was a very hard shoot and we were all very tired, and the only thing that like would keep me going was like this too shall pass, this इसको भी तो खत्म ही होना है, however hard the shoot was, but it was shoot, so it was enjoyable. So I think that's applicable to every, however small or big the situation is. और ये पहले से ही थॉट प्रोसेस रहा है और एक्सपीरियंसेस ने आपको ये सिखाया? नहीं, एक्सपीरियंसेस ने है ना? नहीं तो मतलब कभी-कभी ऐसे लगता था कि छोटी सी छोटी चीज़, खुशी के साथ झगड़ा करके रूम में ऐसे खफा बैठना, ऐसे लगता था कि ये ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मेरी बहन मेरे से नाराज़ है, अभी तो कुछ नहीं है लाइफ में. बट फ्रॉम दैट टू आई थिंक डीलिंग विथ, I'd like to think a lot of things in life since then. The pandemic, this too shall pass. It's passing. It's past. In fact, it's like how हर पिता protective होता है बच्चों के बारे में, irrespective of boy या girl. In fact, बोनी जी like a father figure told the media also कि यार देखो जानवी को compare मत करना श्रीदेवी जी के साथ. Very embarrassed because that's what happens. I feel like he becomes too much of a father always, and I think that. I feel like I've fought quite hard to try to create like an identity, a little bit of myself. Yes, you have genuinely, Baba. Yeah, और फिर एक सेकंड में हाँ के मेरी बेबी को कंपेयर, एक बेबी ने लाइफ में कुछ करने की कोशिश की है, but I mean he's very, you can't take that out of a father. He's always going to be protective. Yeah, absolutely. Like I keep telling my 7 and 3-year-old daughter, I said even if you become 6 feet now, I'm still going to treat you like a 2-year-old. Yeah. That's how it's going to be always, you know. Yeah. Okay, now in Coffee with Karan, Karan Johar लोग कह रहे थे बहुत partial हो रहे थे जानवी के साथ. What do you have to say to that? You know, it's not that deep. Honestly, I love Karan, Karan loves me. I love Sara, Sara loves me. Sara loves Karan, Karan loves Sara. Like it's all good. So if people are getting like, if it gave them a kick to assume that there was some partiality, then I guess that's on them, because there honestly wasn't any of that. I think Karan was overcompensating क्योंकि उन्होंने clarify भी किया था ना शायद कि rapid fire round में उन्होंने कहा था कि मैं जीती थी लेकिन actually सारा जीती थी और मैंने acceptance speech दे दिया था मेरे hamper के साथ, and then after break he was like, no sorry, it wasn't you didn't win. So I think he was just overcompensating. But you know how it is when you're genuinely close to people, you don't try to put on a facade about look how nice I'm being to this one and that one. Like when you're with your friends, आप टांग नहीं खींचते अपने दोस्तों के. Of course. Yeah, so I think that there's always been a freeness with which the three of us, I think, interact with each other, and Karan's too much of a well-wisher to everyone in his life. And I think it's not to be meant to be taken too seriously. I'm telling you, we were so confused. हम सब प्यार में खुश हैं एक दूसरे के साथ, बाकी लोग क्यों ऐसे? I was very confused. उनको भी शायद और प्यार चाहिए. Get some love in your lives. अच्छा, family WhatsApp group में क्या-क्या circulate होता है दिन भर यार? Do you have a big family WhatsApp group? Yes, we have a cousins group called Fam Jam, which I'm very non-active and unresponsive in. मैं सिर्फ मेरे trailers भेजती रहती हूँ ताकि मेरे family मुझे promote करे. group में भी अपना film promote करेंगे. हाँ. But what happens? कौन सबसे ज़्यादा messages भेजता है वहाँ पे ग्रुप में? और जब तुम ट्रेलर का भेजती हो लिंक, फॉर एग्जाम्पल मिली का भेज दिया फैमिली व्हाट्सएप में, कौन इमीडिएट रिस्पॉन्स देगा उस पर? सब इमीडिएटली पोस्ट करते हैं, which is very sweet.
but I think Akshay Bhaiya and Riya Didi are the most active, and yeah, and Ashita and Antara. I think that. उनसे ज़्यादा तो मैं एक्टिव हूँ, मैं पहले डाल देता हूँ. क्या? आपके प्रोमोस, ट्रेलर सब. Oh हाँ, मैंने देखा. I really got your back, lady. I appreciate it. No, but that also not got your back because genuinely अच्छा लगा इसलिए. All right, quick, सिटके का अंगार, the fire question. What does Janhvi want to be known as? Fashionista या actress? Actress. Hands down. Okay. One Kapoor is a better dresser than Janhvi Kapoor. Khushi Kapoor. If Janhvi had a show based on like the Kardashians or the fabulous lives of Bollywood wives, what would you name it? Cute but psycho. Cute but psycho. That's what you think you are? Yes. Oh God, yaar, huh? If Dostana 2 gets revived, who would you like to do it with? Dostana 2? It doesn't have to be the same setup or story, na? Yeah, It can be like me, Sara, and I think that'll be a great combo, huh? yeah, and I'm sure we can find You and a Sara boy. will kill it. Yeah, and me, Sara, and Varun maybe. Yeah. Naughty gang hai ho to yaar. And all of them fireballs, yeah, huh? One movie of these actresses which you wish you had done. Ananya. Gehraiya, because I think Shakun's a great director. I would have loved to work with him. And she was also very good, by the way, huh? Kiara. Kabir Singh. Sara Ali Khan. Kedarnath. Your favorite moment with these people? It could be a film, it could be off the screen, wherever. Varun. Varun, my favorite. Oh God, our whole outdoor was actually a lot of fun. But I think we became like travel buddies. So like our car trips around, and we'd like listen to music and he'd fall asleep and we'd like talk about stuff, and that was fun. Or like a little lunch, everything, just the whole Baval outdoor with Varun was great. Vijay Deverakonda. I think there was a scene in Dear Comrade in the climax where he was superb. When I think Rashmika comes out to see him after the courtroom drama, or the drama inside some sort of courtroom. He was great in that scene. And Ishaan. I shot my first film with him. I think our whole Udaipur schedule was a lot of fun. Even the recce's, we went for like 2 recce's before that film, and we'd just like explore and eat a lot of food, and it was fun. What would you want people to say after they watch Mili? What is that one thing you say, this is what I want to hear? Or phir, mane mera काम निकल गया. That I'm moved by my performance. That they're moved by my performance. I hope they feel moved by my performance. I saw you in the trailer. और तुम अगर फ्रोजन चेंबर में तुमने शूट किया है, you must have really totally been involved. Yeah. Thanks so much. Thank you and so much. I really adore you, Thank and you know that.